Hello everyone. Welcome to another session of decoding answer writing through Topper's answer copy. Again, I have brought the answer copy of Mudita Bansal. This is her GS paper 2 and we know her marks. She has scored 454 and she has rank 44 in this year only, UPSC CSE 2024 only. Now let's peep into the topper's mind that what they write because of which they are able to fetch such good marks. So see the first question, and once you read the question, just go through the answer once, that how she has uh, written in these two sheets, how she has just visualized first and then written next. So the question is, the Indian Constitution does not embody a strict separation of powers, rather, it introduces a system of checks and balances with overlapping functions and interdependencies among the legislature, executive, and judiciary. So I hope you just went through the answer, that how she has written the answer. So first thing here, she has mentioned this thing, Ram Kumar Javaya case. Supreme Court in Ram Kumar Javaya case specified that India does not follow a strict separation of powers. The bonus points here, the Guinea points in our polity paper, in our GS2 paper is the maximum, not maximum. It does not mean you start mentioning the irrelevant cases, but relevant cases according to the demand of the question. If you are mentioning the case laws, if you are mentioning the article wherever possible, then definitely it shows you are well read. It just gives a good impression of yours to the examiner कि ये बच्चा पढ़ के आया है, अच्छे से पढ़ के आया है. He knows and he has this art of interlinking the things कि what currently is going and how he is able to mention those things in his or her answer. तो यहीं पे इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट हो गया कि राम कुमार जवाया केस का मेंशन कर दिया. अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे है. सो सी दिस फ्लो चार्ट. ये फ्लो चार्ट मतलब 1000 वर्ड फ्लो चार्ट है, जिसके अंदर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया कि कैसे जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव. इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं फॉर योर एनहांसमेंट इन योर आंसर्स. तो कैसे जुडिशरी, पार्लियामेंट और कैसे एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. दिस थिंग हैज बीन शोन इन दिस फ्लो चार्ट एंड नाउ दिस फ्लो चार्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड. Again, in description, we have third judge's case, Article 13 mention, Article 142 mention. Badri Prasad का case यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, but Badri Prasad का case is also there. Wherever case laws are possible, just try to mention them. Then, however, independence, however clause. अच्छा, whenever we write the answer, so हम जो भी हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती है, we tell that whether the demand is positive, negative, or whatever the demand. For example, checks and balances यहाँ पे था कि checks and balances कैसे एक दूसरे पे ये सारी बॉडीज करती हैं. फिर however में हम मुदिता ने लिखा क्या, independence maintained through Article 121 and Article 122 कैन नॉट डिस्कस पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स. ये रिप्रेजेंट करता है कि ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंस कैसे फॉलो होती है. तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे एक 2 पेजेस पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट वे में, क्रिस्प वे में बता दी गई है. एंड ऑब्वियसली हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है, कैसे जो हेडलाइंस हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो बॉक्स करी गई हैं. द बेस्ट पार्ट इज दिस हाउएवर क्लॉज, this case law mentioned, of course this flow chart. This is a very good answer. Now let's move on to the next answer. The question is, parliamentary committees serve as a vital tool for legislative oversight. Okay, जो parliamentary committees हैं वो एक legislative oversight का tool है, ensuring accountability, transparency. Okay, fine. Then in light of statement, examine the role of public accounts committee. तो हमसे पूछा public accounts committee का रोल क्या है in establishing financial accountability of the executive. तो पहले parliamentary committee का description कर दिया इंट्रोडक्शन में. जब भी क्वेश्चन हम देखते हैं, जब भी हम आंसर देखते हैं किसी भी टॉपर का, आपको अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग कि इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन पे ध्यान देना है. इंट्रोडक्शन में क्या गिनी पॉइंट्स डाले हैं, क्या ऐसा प्लस पॉइंट डाला है जो इंट्रोडक्शन पढ़ते ही एग्जामिनर इज गोइंग टू गेट इम्प्रेस. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज आर प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105, 118 एंड इन रूल्स ऑफ business of houses to ensure an additional system of checks and balances. Choice of words, additional system of checks and balances. हर एक टॉपर का, जैसा कि मैं कहती हूँ, कुछ ना कुछ यूएसपी होता है.
whenever you will see Mudita ka answer, she has a very good selection over the choice of words. Additional system of checks and balances. Fine if you could. This is also simple writing only. This is not very complicated. But still she has tried her best कि choice of words उसका अच्छा हो. The next thing is parliamentary committees vital tool कैसे काम करती है. Parliamentary committee, how it acts as a vital tool. Then again you have to focus here on the presentation कि आंसर प्रेजेंट कैसे किया गया है. लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, देन द 2 points. कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है, देन द 2 points. कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है, देन द 2 points. ठीक है. एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज, रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी established in 1921. कितने 22 members होते हैं इसमें. जस्ट अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ठीक है, ऑब्वियसली दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड बट ठीक है, वी कैन डू दिस. फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन्ड होती है. वर्क्स विद CAG टू स्क्रूटनाइज appropriation, finance and PSC reports. Then scrutinizes extra grant demands. However, again, however clause कि whatever thing we have mentioned, ठीक है, this was the demand of the question. However clause, again I am emphasizing on this clause that however effectiveness limited है. Effectiveness है पर effectiveness limited है, ये चीज़ भी mention कर दी है. कैसे limited है. Postmortem work है. No comptroller power, only advisory and recommendatory. Then lack of sufficient discussion, again 60% absence, और यहाँ पे again data mention है. तो I think you are able to see maximum data is there. मतलब not only this answer, मतलब और भी answers में data is there wherever possible. Then articles are there wherever possible, and obviously the presentation part. No, there is no lack of content is here, and content की भी कमी नहीं है. Content is also to the point, and presentation is also to the point. This answer is also very good. Now let's see the next question. The next question is, the ongoing internal crisis of Myanmar is impeding India's Act East policy. ठीक है, हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है. कैसे ये म्यांमार में जो चल रहा है ये कैसे इम्पीड कर रही है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को. इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू डील विद द क्राइसिस एसोसिएटेड चैलेंजेस. ठीक है, लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. Myanmar's internal crisis, such as military coup in 2021 and Rohingyas crisis, has impeded India का Act East policy. This is the reason Act East policy जो है India का impacted है. क्या key impediments है? कालादान project, IMT, then Asian Forum, Japan Pacific का access limited है. ठीक है. Next thing, measures by India. What measures India has taken to reduce these impediments, to reduce the effects of these impediments. Then smart fencing, humanitarian assistance is there, BIMSTEC has been mentioned, Northeast road infra development under Bharatmala for alternate connectivity. Challenges क्या associated है. Read the question again, look to the answer again, just go through the answer again. It's not that कि I'm not here to read the answer, I'm here to just show the, again and again I'm mentioning the presentation part, the content part. ठीक है, कैसे यहाँ पे की इम्पेडिमेंट्स को ऐसे जस्ट एरो देके हमने रिप्रेजेंट कर दिया. हमारा ये 10 मार्क का क्वेश्चन है. वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू राइट ईच एंड एवरी सेंटेंस. शॉर्ट सेंटेंसेस वर्क. ओके, एंड द लास्ट वी वर रीडिंग दैट challenges associated. So rising ethnocentric conflicts, golden crescent wala problem, delayed implementation and cost of infrastructure development. So yes, this was again a very well structured answered, well organized answer. Obviously everything is there, examples, BIMSTEC is there, whatever the demand of the question, basically whatever the demand of the question is, it has been there, it has been here. Now let's see the next question. यहाँ पे थोड़ा सा ये PPT में कट गया है, बट ठीक है, हम देखते हैं. The cooperative nature of Indian federalism is being increasingly challenged by emerging differences. Cooperative nature is being challenged
by emerging differences in center-state relations. Discuss. Okay, this is a 15 marker. What steps can be taken to strengthen the cooperative spirit of Indian federalism? Just go through the answer. As I always say कि whenever you are seeing a topper copy, just go through the answer. कैसे introduction लिखा हुआ है, कैसे इस आंसर को ब्रेक किया हुआ है, आंसर ब्रेक करना, आंसर डिकोड करना, क्वेश्चन डिकोड करना is also very important. Decoding is obviously very important कि इसके different parts कैसे बनाने हैं, इसको इसमें पूछा क्या है, ठीक है? तो cooperative structure of India अगर हम देखें तो again the points has been mentioned. Administrative level पे, legislative level पे, fiscal cooperation is there. Then institutional through interstate water disputes committee, article 262, interstate council, article 263, after Sarkaria commission recommendation. Cooperative structure of India has been defined. Okay, what are the emerging differences? अब इस cooperative nature of Indian federalism में emerging differences कहाँ आ रहे हैं? Fiscal differences हैं, delays in fund devolution. For disaster management के लिए fund devolution बहुत time लेता है. Political parties different in some states and center, allegations of horizontal asymmetry. Just look at the answer, just look at the points, that there is no bluffing, just no exaggeration, and to the point answers are there. There is nothing like कि कुछ भी हम लिख रहे हैं कोऑपरेटिव नेचर और कोऑपरेटिव कितने बच्चे यहाँ पे कोऑपरेटिव नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म को 2 पेज में डिफाइन कर देंगे एंड दे विल एक्सपेक्ट कि 3 पेज तो लिख के आए थे, मार्क्स क्यों नहीं आए? तो as per the demand of the question, again what was the last part? What steps can be taken to strengthen the cooperative spirit of Indian federalism? Indian federalism की cooperative spirit को strengthen करने के लिए what are we doing? Then steps to strengthen the cooperative federalism, and ये page थोड़ा कट गया, but the point to notice here is what you have to notice. See, you have to notice the this thing कि कैसे एक एक चीज को एड्रेस किया गया है. स्टेप्स पूछे हैं टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इमर्जिंग डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं, एंड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. सो ऑल दीज थिंग्स हैज बीन मेंशन्ड. So learn from the toppers copy as much as possible because they have already done this thing. They have already just crossed all the 3 stages of this exam. So yes, today this is for today. I hope you just gained something and going to take some valuable things from this session. Thank you.